His Excellency Mr. Miloslav Stasek, Ambassador of Czech Republic, His Excellency Mr. Diouf, Ambassador of Senegal, CSS Chawla ji, Member Secretary SHM, Dr. Rachel Davis, Dean Delhi School of Business, Shri Tushar Pandey, Senior President and Country Head, Yes Bank, Dr. Nisha Peshin, Director, DAV CMC, ladies and gentlemen. And dear children, it's a matter of honor and privilege for me to be present in this function, International Summit on School and Higher Education, with the very relevant topic, role of information and communication technology and beyond, and Come to India program. Myself being an active socio-political life with a role in the government, I experienced surrounded by media such as newspapers, radio, televisions, computers, and mobile phones. All these are medium of ICTs of the day, and they are playing a very crucial role in today's fast-changing knowledge society. I feel ICT is a force that has changed many aspects of our lives. Impact of ICT in all the sectors, including medicine, tourism, travel, business, banking, engineering, etc., has been enormous during the past 2 decades. The way these fields are operating today are vastly different from the way they operated in the past. Though ICT has made a mark in the education sector also, it has to go a long way as compared to other sectors. We are at a critical junction with the new technologies and communication, from individualized computer-assisted learning system to internet, radio, and television-based mass learning system. I understand there have been many factors impending the uptake of ICT in education across all sectors. These are lack of funding for training, motivation, etc. Besides these, poverty and illiteracy are also the factors that are affecting the growth of ICT in the education sector. As per 2011 census, the overall literacy rate is 74%, and only 7% of the population reaches the graduation level. Under this scenario, it becomes very difficult for any agency to promote use of ICT in the education sector. Realizing the potential of ICT, our government has launched a national mission on education through ICT. But the question of having the quality of education has not been given adequate attention. I do believe that there had been many limitations, but the time has come to address these issues. The most pertinent, I believe, is the pride in one's own educational system. I have noticed a general tendency to emulate the Western education system blindly. The model of Western educational system cannot be replicated in toto in Indian context because of difference in culture, value system, and other socio-economic conditions. Our country has been a destination since a time immemorial for the learners and students in the field of philosophy, religion, etc.
We are the country who have privilege of having the first ever democracy set up in the recorded history of humans. The world had taken keen interest in such institutions. India, since its ancient era, has remained unique in imparting education. Our Gurukul, Takshashila, and Nalanda are the glaring examples of imparting education known worldwide. The Vedic system of education in ancient India produced the eminent mathematician Aryabhatta, who acknowledged the value of zero, based on which now we are in the digital age of modern technology. We are proud that our specialists in the field of information technology are still guiding the world, including the most developed countries, even with the education system of the day. I take this pride to share that our government has taken an initiative wherein a system of certification will be introduced for the institutions of higher and technical education. This will enable our institutions to compete with best educational institutions of the world. Our institutions like IIM, IIT, AIMS, etc. are known worldwide for imparting quality and standard education. We have to create many more such institutions in time to come. In my opinion, information and communication technology has applicability in all the fields of activities. We can't even imagine any routine activity of the life without the use of ICT. Our dependence on ICT cannot be avoided altogether at any stage and in any field. Therefore, ICT should be a part of education for all the disciplines. India is a vast country having regional languages as medium of education. Countries like Japan and China impart all such technical educations in their own language. We must think of introducing education at a schooling level, ICT, in vernacular languages. This is the time when the whole world is watching India to take a lead in all the spheres of the life. I am confident that our nation will come up to the expectations. I hope eminent scholars, educationists, technocrats, and students participating in this program would deliberate on these issues besides what they feel necessary and submit recommendations for a thought and implementation for improving the ICT education in the country even better. Now please allow me to speak in Hindi also, because I belong to Kanpur, UP, which is the mainland of Hindi. देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि इस सिम्पोजियम में आकर आप लोगों से आईसीटी के बारे में विस्तार से विचार विमर्श करने का मौका प्राप्त हुआ है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में गरीबी तो है, बैकवर्डनेस तो है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है हमारे देश में जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, जिस पर हमें गौरव होना चाहिए। एक ऐसा देश जहां आज भी 25 से 30% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। एक ऐसा देश जहां 40 से 50% लोग औसत आय वर्ग के हैं। उस देश ने अगर पिछले 20-25 वर्षों में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सारी दुनिया में अपना सिक्का स्थापित किया है, तो इससे बड़े गौरव की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती।
हमने ये प्रूव किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके कैसे हमारे बच्चे दुनिया के विकसित देशों के बच्चों से आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शायद आपको भी मालूम होगा कि अगर दुनिया के सबसे विकसित देश में नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर किसी मुल्क से है तो वो भारतवर्ष से है, और इस बात को वहाँ के मुखियों ने भी तस्लीम किया है। क्या कारण है? कारण केवल एक ही है कि अगर हमारे देश में गरीबी और बैकवर्डनेस से लड़ने की क्षमता विकसित कर ली जाए, अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया जाए, तो दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत अकेले सक्षम है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। और ख़ास तौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके की प्रगति हमारे देश ने की है, हमारे देश के बच्चों ने की है, हमें चाहिए कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। जहाँ तक सरकार का संबंध है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 5-7 वर्षों में कितनी IITs खोलने का संकल्प भारत की सरकार ने लिया है, कितने IIM खोलने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोलने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है, और उसमें से 75% संकल्पों को उसने पूरा भी किया है। ये इस बात का संकेत है कि सरकार अपनी ओर से चिंतित है, लेकिन गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और जैसा मैंने पहले कहा है कि एक ऐसे देश पे जहाँ 25-30% लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों, गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होना मुमकिन नहीं होता है कि वो हर क्षेत्र में लैंडमार्क स्थापित करती चली जाए। इसके लिए हमें भारत के उन सक्षम लोगों का सहयोग चाहिए जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम हों, चाहे कारपोरेट सेक्टर के सक्षम लोग हों। जब तक उनका सहयोग पूरी तरह प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं जिसे अचीव करने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये तड़पन और ये तरस आने वाले समय में हिंदुस्तान का फ्यूचर बनाएगी। ये बच्चे जो आज चाहते हैं कि वो सारी दुनिया में अपना सिक्का स्थापित करें, इनको जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे ही ये पिछड़ेपन से ऊपर उठेंगे, वैसे ही हिंदुस्तान का परचम सारी दुनिया में लहराने लगेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। एसोचैम को ख़ास तौर से बधाई देता हूं कि एक अच्छा सेमिनार, एक अच्छी वर्कशॉप उन्होंने आयोजित की है, जिसके माध्यम से हम देश के बच्चों को भी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और देश को भी अच्छा संदेश दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।